your attention on something where we're facing a serious challenge. Do you remember this? There are a lot of people who are profiting from things that aren't so healthy, and they can say things that sound good in a soundbite, but may not be entirely true. Eat butter, butter's okay. Dairy management, the beef industry, the Atkins, there are a lot of people who are spending a lot of time trying to convince you to eat their products. तो कहते हैं, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा कि वर्ल्ड में ऐसी कई स्पेशल इंटरेस्ट हैं जो गलत तरह के खाने को पुश करेंगे आपके सामने कि आप इसको खाओ, जैसे कि बटर खाना सेहत के लिए अच्छा है, एटकिंस की डाइट है, कीटो डाइट है, बीफ खाओ, गाय का मीट खाओ, दूध पियो, ये ऐसी चीजें आपको बताई जाएंगी. And their secret weapon is research. Because if I can do a study that says 20% of adolescent girls are low in iron, then I can press release this, and every TV station on the 6 o'clock news will say, a new study shows that women tend to be low in iron, therefore doctors recommend more red meat. Or I could do another study showing that people are low in calcium, so therefore we need cheese and sour cream and milk and dairy products. Industry uses this. They are not fools. This is the Cattlemen's Beef Board. Look at their research budget, $6.7 million per year. तो उन्होंने कहा कि ये लोग क्या करते हैं, इस तरह की इंडस्ट्री ये उल्टी सीधी रिसर्च बनाते हैं और उस पे बेहद पैसा खर्चते हैं और फिर उसको आगे न्यूज़ मीडिया में चलाते हैं. तो उन्होंने कहा ये जो अमेरिका का जो कैटल बीफ बोर्ड है उसका बजट देखिए $6 मिलियन उनका सिर्फ रिसर्च पे है. ये लाल रंग का जो हिस्सा है, इतना बड़ा हिस्सा उनका रिसर्च पे है. Some of that's marketing. A lot of that is things to get on the evening news. They want your kids, your grandkids to buy their products. नाम रिसर्च का दिया है, लेकिन वो सारा पैसा जाता है आपको मीडिया टाइम बाय करके आपको गलत इंफॉर्मेशन देने का. Now, the Dietary Guidelines Advisory Committee, did you see this earlier this year? This is a group picked by the federal government to decide what Americans should eat. And they put out a report that said there's available evidence shows no relationship between the consumption of dietary cholesterol and serum cholesterol. Cholesterol is not a nutrient of concern for overconsumption. In other words, we can finally go back and have what we have been craving, which is this egg. And this is apparently the most important thing in our lives. And we can stuff it down our gullet. In fact, if cholesterol doesn't matter, why stop there? We can have sausage again. And this is what Americans over the last several months have started to think. A Gallup poll last month showed that Americans are less worried about food than they ever were. And not just this, we can eat salt, we can eat sugar, we can eat all this stuff. Who cares? Well, I took a look at a research study that happened to be published by one of the members, Alice Lichtenstein, who's a good researcher at Tufts University. She published a study looking that I believe they relied on. And they showed that dietary cholesterol has really only a very modest effect on your blood cholesterol. So in other words, are you with me? If you're eating a lot of eggs and other high cholesterol foods, according to this study, it's not really doing much to the cholesterol in your blood. So don't worry about it. Well, that's the headline, but killjoy that I am, I got a hold of this study. And it was a review of 12 prior studies, and here they are. This won't be on the test. Don't try to read this, but there's 12 of them. These are the sponsors. Can you see that? तो उन्होंने कहा कि एक ऐसी जो थी वो स्टडी बताई गई कि जो कोलेस्ट्रॉल है डाइट का, वो जो है हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता. यानी कि जितना मर्जी कोलेस्ट्रॉल खाओ, वो हमारे ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ा सकता. ऐसा एक जो है वो यूएस गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी एक स्टेटमेंट आई, जबकि ये कॉमन सेंस की बात ही नहीं है. ऑब्वियसली अगर हम कोलेस्ट्रॉल ज्यादा खाएंगे डाइट में तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा. तो फिर डॉक्टर नील बर्नार्ड क्या कहते हैं, मैंने जाके वो रिसर्च देखी कि उस रिसर्च के पीछे कौन कौन लोग हैं, और अधिकांश जो लोग थे उस रिसर्च के, फिश थे, एग. तो मोस्टली जितने भी लोग थे उसके स्पॉन्सर्स सारे के सारे जो थे वो
एग डेयरी मीट इंडस्ट्री के लोग थे। 11 of the 12 are industry. 10 are the egg industry, and 1 is fisheries. That's prawns they're worried about. Now skip with the interventions, but what I तो उन्होंने कहा जो 11 के 11 लोग थे उसमें से 10 जो थे वो एग्स थे, एग इंडस्ट्री के थे, और एक बंदा जो था वो फिश इंडस्ट्री का था। तो सारी की सारी जो ये स्टडी थी किसके द्वारा कराई गई थी? एग और फिश इंडस्ट्री के द्वारा कराई गई थी। यानी कि इस रिसर्च को करने वाले सारे लोग जो थे वो एक तरह से स्पेशल इंटरेस्ट के लोग थे, बायस्ड थे। put here, I put U if they found an unfavorable effect of the eggs on your cholesterol level. I put F if it had a favorable effect. And in some cases for statisticians, it was statistically significant, in others less. तो कहते हैं फिर मैंने यू साइन उसको दिया कि अगर उनके रिसर्च के अंदर अनफेवरेबल यानी कि एग से जो है कोलेस्ट्रॉल जो है वो खराब हुआ, और फेवरेबल उसको दिया जिसमें कि पता लगा कि एग जो था वो ठीक रहा उसके लिए। अगर आप देखोगे तो अधिकांश स्टडी में यू 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 मतलब खराब इफेक्ट, खराब इफेक्ट, खराब इफेक्ट, खराब इफेक्ट आया स्टडी का। So, but do you see the pattern? In virtually every single study, if you're feeding eggs or eating shrimp or whatever, your blood cholesterol does go up. It goes up. तो कहते हैं कि आपने देखा 11 में से 10 स्टडीज ने ये पाया कि अगर आप डाइट में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा ले रहे हो तो आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। ये मतलब स्टडीज का जो मेन निष्कर्ष निकला इन स्टडीज का, ओवरवेलमिंगली बहुत ज्यादा मेजॉरिटी से ये निकला कि जो आप कोलेस्ट्रॉल डाइट में खा रहे हो उससे आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। Up a little bit or it goes up a lot. And that's what people weren't seeing. 92% of cholesterol studies are funded by industry. This was not the case back in the 50s and 60s. What happened? And so just taking one sorry. deep breath in. We can eat salt, we can eat sugar, we can eat all this. It's like they stopped doing studies to see if smoking causes lung cancer. It just does. Stop studying it. The only people who fund research now does go up. It goes up a little bit or it goes up a lot. And that's what people weren't seeing. 92% of cholesterol studies are funded by industry. This was not. तो कह रहे हैं कि 92% जो स्टडीज हैं फूड रिलेटेड जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हो उसको फंड करने वाले खुद एग मीट डेयरी इंडस्ट्री के लोग ही होते हैं। उसमें से भी अगर ये निकल के आता है कि सारे के सारे जो स्टडीज हैं, अधिकांश स्टडीज वो कहती हैं कोलेस्ट्रॉल जो है वो इन सब खाना खाने से कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ जाता है, फिर भी ये लोग उस बात को दबा देते हैं और गलत गलत झूठी खबरें मीडिया में फैला देते हैं। तो अगर जब इनकी ओरिजिनल रिसर्च जाके देखो, भले इन्होंने खुद की हो, उसमें भी हमें पता चलता है कि जो ये चीजें हमारे लिए कितनी खराब है। Not the case back in the 50s and 60s. What has happened? What has happened is that by 1990, 1995, it was clear cut. Cholesterol in foods, about half of it is absorbed into your blood. It makes your blood cholesterol rise. End of story. The federal government stopped doing research on it. It's like they stopped doing studies to see if smoking causes lung cancer. It just does. Stop. तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों है कि कोलेस्ट्रॉल पे होने वाली सारी की सारी जो रिसर्च है वो डेयरी मीट इंडस्ट्री कर रही है। कहते हैं क्योंकि 1960 में यूएस गवर्नमेंट ने एकदम प्रूव कर दिया था कि जो हम खाना खाते हैं, जो डाइट में कोलेस्ट्रॉल आता है, उससे हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो यूएस गवर्नमेंट ने, तो एनआईएच होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, उसने कोलेस्ट्रॉल के ऊपर स्टडीज फंड करना बंद कर दिया। ठीक उसी तरह से कि भाई स्मोकिंग करने से लंग कैंसर होता है, इस ये कोई डिबेट का इश्यू ही नहीं है, तो इस पे स्टडीज और क्यों की जाए, तो उसी तरह से बंद कर दी। तो अब क्या कर रही है जो फूड इंडस्ट्री है, वो इस तरह की रिसर्च को फंड कर रही है और उल्टे सीधे नतीजे निकाल के मीडिया में झूठी खबरें फैला रही है कि इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। Stop studying it. The only people who fund research now are the egg industry and to some extent the shrimp industry to try to make a case that it doesn't matter. And if I bring in relatively small groups of participants, I can get results that aren't statistically significant. I can say it could be just chance. And they do a lot of these studies. They say it's just a chance finding, it's not significant. And then they send these to
good researchers to say, it's just small, it doesn't matter. You can forget about it. This is a lie. Okay? So there are 5, are you with me? Is this making sense? कह रहे हैं कि आपको समझ आ रहा है मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि कितनी बड़ी धांधली हो रही है। जिस तरह की हमें बताया जा रहा है कि दूध, मीट, अंडा, मच्छी से कोई फर्क नहीं पड़ता, खाओ, इस तरह का प्रोटीन हेल्थ के लिए अच्छा है, बॉडी बिल्ड करो, सेहतमंद रहो। बताया जा रहा है छोटे-छोटे बच्चों को खूब अंडे खिलाओ, रोज अंडा खिलाओ, बुजुर्गों को अंडा खिलाओ, उनको प्रोटीन की जरूरत है। कहते हैं ये सब बकवास है, ये बड़ा एक माफिया है फूड एंड ड्रग्स का मिलाव। जो खाने बनाने वाली इंडस्ट्री है वो इसको पुश कर रही है और जो दवाई बनाने वाली है क्योंकि बीमारियां बढ़ रही हैं उनका भी भला हो रहा है। ये इन दोनों की मिली भगत है और ये जो है एक साइंस को भी इन्होंने जो है वो धुंधला करने की कोशिश की है। तो ये सब गलत हो रहा है जो हो रहा है। इसीलिए प्योर रिसर्च को जानना बहुत जरूरी है। मीडिया में सुनी सुनाई बातों पे आप बिल्कुल यकीन नहीं करें। इसीलिए डॉक्टर नील बर्नार्ड जैसे लोग, डॉक्टर ग्रेगर जैसे लोग और ऑफ कोर्स हम जैसे लोग जो हैं वो बहुत जरूरी हैं जो असली रिसर्च दिखाते हैं। There are 5 steps for winning this battle. The first is you have to use research strategically. And I mean good, solid, well-conducted, honest research. Secondly, you need to bring nutrition into medical education and care. You shouldn't be able to walk out of your doctor's office without the doctor saying, "Are you smoking? And tell me about what you're eating." The doctor doesn't have to give you an hour nutrition lecture, but the doctor has to know where to refer you to and to give you those resources. And if the doctor doesn't, they're not doing their job. It needs to तो कहते हैं कि हमें पहली बात तो अच्छी जो रिसर्च है जिसने एक्चुअली बार-बार प्रूव किया है कि आप सारी की सारी बीमारियों को कैसे रोक सकते हैं और रिवर्स कर सकते हैं। ये रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है। वो हमें लोगों तक पहुंचानी है और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी रिसर्च को फंड करना है। दूसरा, आपका जो डॉक्टर है उसको भी इस रिसर्च के बारे में मालूम होना चाहिए और उसको हर पेशेंट से पूछना चाहिए जब वो आपके ऑफिस में आए, डॉक्टर के ऑफिस में जाए कि क्या आप स्मोक करते हैं और बताइए मुझे आप क्या खा रहे हैं। तो पहले तो डॉक्टर को खुद पता होना चाहिए, दूसरा उनको पेशेंट से इसके बारे में बात करनी चाहिए। अगर ये 2 बातें नहीं हो रही हैं तो डॉक्टर अपना काम नहीं कर रहा है। तो ये डॉक्टर की जिम्मेवारी है कि वो पहले रिसर्च को जाने और फिर पेशेंट्स को इसके बारे में बताए। involve the insurers so that they're in the game, and it needs to involve schools and it needs to involve businesses. So we did this at Geico, but there isn't any reason that every business can't say, if we can cut our healthcare costs, we're going to be more competitive. तो कहते हैं कि फिर हमें स्कूल में पढ़ाना चाहिए लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में और हमें अच्छी न्यूट्रिशन के बारे में अपने काम पे, अपने जॉब पे, अगर हम कोई बिजनेसमैन है, कंपनी चलाते हैं, किसी कंपनी का हिस्सा है, तो वहाँ हमें सही न्यूट्रिशन और बीमारियों से कैसे बचा जाए ये जानना चाहिए। हमने गाइको जो एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी अमेरिका की वन ऑफ द बिगेस्ट है, उसमें हमने ये प्रोग्राम सक्सेसफुली किया और बहुत जो मेडिकल कॉस्ट थी उसको हमने काफी कम कर दिया। My cars in Detroit can compete with cars in Japan if I'm not spending $2,000 per car on Viagra, number 1, Lipitor, blood pressure medicines, diabetes medicines. All of those are related to diet, okay? Every business in America could say, lunchtime, you can have a class on Wednesdays. Now, this is a little bit bigger. This is one of our classes, a little bit bigger than we like, but you can do this. We did it at Geico. We've done it at the Power Company in Washington. We've done it all kinds of places. Once you bring this stuff into work, you can revolutionize your workplace. Now, when it comes to research studies, I'm going to tell you what we need. We need meta-analyses that pull all the data together because in 5 years' time, the Dietary Guidelines Advisory Committee is meeting again, and that's what they are going to look for. So if the egg industry is buying them, that's what they're going to get. We at the Physicians Committee, this is what we do. And this is what has to be done. You need good clinical trials on diabetes, on Alzheimer's disease, on hypertension. And you need exploratory studies. So if rheumatoid arthritis is something that maybe doesn't have to be treated by drugs, but can be treated by diet, let's study that and not wait for just another drug trial. That's what we need to do. Now, the last thing that I just want to say is we can get there.
because we've been here before. A generation ago, I was sitting in a meeting in my hospital, the George Washington University Hospital. We were deciding whether or not we should ban smoking. We sold cigarettes in the gift shop. I bought them. My head of surgery bought them. We would walk down the corridor to the doctor's lounge smoking cigarettes. Our patients smoked in bed. And that you remember this time. We decided we're going to ban smoking, and every other hospital did the same thing, and every restaurant and every airline and every government building and every business says you can't smoke here. And that became the greatest gift to every smoker who wanted to quit but needed some support. And now it can be a February morning in Washington, D.C. There's some guy shivering in his shirt sleeves outside, finishing his cigarette before he's allowed into his non-smoking building. Well, people are changing their diets too, but not fast enough. We're just like where we were with smoking. We weren't idiots then. We were just taking our time because it takes time to get cancer. I can quit eventually. तो कहते हैं कि मैं ना उम्मीद नहीं हूँ कि चीजें चेंज हो सकती हैं। कहते हैं जैसे कि स्मोकिंग थी एक जमाने में, वो भी चेंज हुई ना। कहता मैं खुद एक जमाना था, मैं स्मोक करता था। मेरे हॉस्पिटल में सारे डॉक्टर स्मोक करते थे। हॉस्पिटल की गिफ्ट शॉप में सिगरेट मिलती थी। पेशेंट जो होते थे हमारे बेड में लेटे लेटे स्मोक करते थे। कहते हैं लेकिन जब हमें रिसर्च के बारे में पता चला, हमने ये सारी स्मोकिंग बंद कर दी। हॉस्पिटल में, बिल्डिंग्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, प्लेन्स में, सब जगह स्मोकिंग बंद कर दी। तो क्या हुआ? उन लोगों की बेहद मदद हुई जो स्मोकिंग छोड़ना तो चाहते थे, लेकिन उनको वो पुश नहीं मिल रहा था कि हम स्मोकिंग कैसे छोड़ें। तो जब सब जगह बंद हो गई तो फिर उनको ऑटोमेटिकली छोड़ने में आसानी हुई। कहता ठीक वही बात है डाइट की। अब बहुत से लोग हैं वो जानते तो हैं कि ये दूध, मीट, अंडा, मच्छी, घी वाली जो डाइट है खराब है, लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कैसे छोड़ें, क्या करें। तो उन्होंने कहा इसी तरह का पुश जो है हमें उन्हें भी देना होगा। Well, we made the decision the time is now with cigarettes. A generation fast forward to today, that's where we are with food. Now is the time. तो कहते हैं जैसे हमने सिगरेट्स के लिए ये डिसीजन लिया कि सिगरेट्स बंद करने का समय आज है, अब है। तो कहते हैं कि वो लिया हुआ डिसीजन जो हमने एक जनरेशन पहले लिया था, वो नेक्स्ट जनरेशन को बहुत हेल्प हुई उसकी, क्योंकि ये बीमारियां आने में भी कुछ समय लगता है। ठीक उसी तरह से आज अगर हम दूध, मीट, अंडा, मच्छी, घी बंद करेंगे तो हम अपनी ही लाइफ में देखेंगे 10, 20, 30 साल बाद हमारी सेहत कितनी बेहतर रहेगी, और ये काम हम अपने लिए आज करेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी करेंगे, क्योंकि वो ही हमसे फिर देख देख के जो हमारे घर परिवार जानकार लोग हैं वो भी बदलेंगे। Because we don't do anything, our kids are at risk, everyone we love is at risk, and we are at risk. But we कहते हैं क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे जो हैं उनकी सेहत जो है वो खतरे में है, हमारे प्रियजनों की सेहत खतरे में है, हमारी खुद की सेहत खतरे में है अगर हम ये चेंज आज नहीं करेंगे तो।